Ladies and gentlemen, it's showtime. Bump, bump. Lakshya Raj, हमारे दोस्त जिनका लक्ष्य है to show John Abraham in the best manner possible. And John, a man who doesn't let failures come his way. कैसा है मेरे भाई? All good, all good. So good to see you. Thank you, thank you. You know, एक चीज मैं बताऊं कि इतने सालों से मैं जॉन को जानता हूं, almost 25 years. We've been friends. ये साला बदलता नहीं है, चाहे जो भी हो जाए. How do you maintain ये balance दिमाग में with success या failure? कैसे do you keep yourself rooted, भाई? I think keeping your old friends, remembering old times like we were just before this. And we can't talk about it on camera, but Yeah, but I think that's important, and just not forgetting where you've come from. It sounds very cliche and old school, and I always tell Laksh also this. I say, whatever happens to you, if your feet go off the ground, just look at your feet and plant them firmly to the ground again. Stay grounded. Yeah, stay grounded. That's it. But लक्ष्य सीरियसली बीइंग इज डायरेक्टर, कहीं तुम्हें लगा कि यार एक मोमेंट ऐसा है जहां जॉन उड़ रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्शन सीन्स, बट रियल लाइफ में उड़ रहा है, थोड़ा ऐसा लगा है कभी तुम्हें? No, not at all. He's one of the most humble people I've ever met, you know, and he's one of the best producers as well. So that was great. मैंने कूट के पैसा दिया तुमको? नहीं, मैंने ये जूते नए जो इसके आए हैं वो जॉन की वजह से आए हैं, राइट? Oh, I didn't notice Correct, these correct. नए shoes. जूते That's भाई very इसके. nice shoes from. from Ceylon. Oh, wow. But So moment you have John Abraham as a producer, you get new shoes like this. I think if you have Johnny Abraham as You a get- producer, you get a new body. And hopefully a new mind as well. Totally. You know, John के quotes मैं बहुत मानता हूँ. And look at this. You said एक बार I'm not afraid of failure, so I can take risk. Correct. One failure you're proud of, John. वो कौन सा है? No smoking. wow. You've always maintained it's your best performance. Yeah, it's a kind of film that I kind of love doing, and I spoke to Anurag recently, and you must ask him. And I told him everybody makes sequels out of hit films. Let's make it out of a flop film. Why not? Yeah, totally. I love no smoking. But I love it कि जिस तरीके से तुम लोग जब फिल्म्स फ्लॉप हो जाती है ना, लोग डिस्टेंस करते हैं अपने आप को. लोग कहते हैं यार मेरी गलती नहीं थी, ये था वो था. You take ownership of failures. Yeah, totally. I think it's not fair to throw your director under the bus. It's absolutely not fair, because when you were doing the film, you signed up for it. So why would your director be responsible for your failure? You know, he probably needs to better his craft, which is different, but you're also responsible for it. Laksh, एक और quote. Look at this. It's like TEDx. I am where I am because of certain chances I took. But these chances didn't just happen. I made them happen. Yeah. One chance जो तुम कहते हो फट जाती बाकी दुनिया की, पर मैंने लिया. I think my first film, जब भी मुझे बताया गया था कि you're not a hero, you're an anti-hero, and Jism was at that point of time the quintessential hero worked. Yeah. You know, the good man worked, and for your first film to play an anti-hero, I think it was a chance I just grabbed and I took. Thanks to Mahesh Bhatt and Pooja Bhatt, पर उस जमाने में लोग बोलते होंगे कि यार तुम अगर विलन बन जाओगे तो जिंदगी भर विलन होगे, राइट? yeah, अभी तक बोलते हैं. अभी तक बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट इतना क्यों करते हो. मैंने कहा उनको कि मेरी जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट है, you know, and I've just lived my life like differently. That's what makes a person, right? All these lines, ये जो है ना, सारे lines, this is what makes a person. That's what makes you beautiful. Yeah. And you're the only guy who probably on Instagram doesn't use a filter. I don't know how to. I'm so glad. I don't know how to use anything. और जबान पे भी फिल्टर नहीं. He's very honest. Yeah, best. Yeah. Right? Yeah. तो ऐसे देखो लोग आजकल बॉलीवुड में हर जगह आधा घंटा लेटे फिल्टर सेट करने के लिए. तुमने कभी नहीं किया वो? I don't know, मुझे मतलब माइंड का भी फिल्टर सेट नहीं होता है, जबान का भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, I don't know how to, और इंस्टाग्राम का भी नहीं होता है. एक और कमेंट. I don't try to be what I am not, and my middle class values are my plus points. Yep. Tell me about that. You know, when your electricity bill goes up, it hurts. You know? So you generate electricity from within. Yeah, I wish I had a cycle to pedal power, but you know, things hurt me like जब भी आप गाड़ी चलाते हो, I've got a car, and उस पे लिखा होता है claimed 10 kilometers per liter, and I get 7 kilometers per liter. I get heartburn. अभी भी? अभी भी. I'm talking about 2 weeks ago. इतने पैसे कमाने के बाद भी? I like it. But
you know, that's what I'm saying. You can take John Abraham out of the middle class. You can't take the middle class out of John Abraham. That's a tough one. You know, that's it. Because today, can I make a confession? Please do, yeah. I ran out of track pants, and this is the last one that I wore in Ahmedabad yesterday, so I wore it today. My point is, my 2 other track pants वो wash में गए, और ये एक बाकी था, तो ये पहना और काफी fade हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर का मैंने change किया, so that's good. Wow. Yeah, but there's nothing. I'm not saying this that for any reason. I'm just saying this क्योंकि वो ये मैं हूँ. अगर मैं कुछ loud या fancy कुछ पहनूं तो you'll know it's not me. In fact, जब paparazzi का ईरा शुरू हो रहा था इंडिया में, पहले जॉन एब्राहम के फोटोग्राफ्स आते थे और वेयरिंग चप्पल्स टू इवेंट्स. और थोड़े लोग बात करते थे यार ये चप्पल पहन के आ रहा है. एंड नाउ कट टू फ्यू इयर्स डाउन द लाइन सब it become cool to wear chappals, Yeah. And you started that because you were comfortable in your skin. Yeah, absolutely. And with that face. तुम इसके फेस के बड़े दीवाने हो. I know it. Correct. दो और नए जूते इसको खरीदो. लक्ष्य, I'm so happy कि तुम्हारा पहला फिल्म जॉन के साथ है as a director. Because John is truly one of the most adorable people I've met in my life. Thank and you. I mean that. बंदा बहुत सही है. कभी कभार जॉन बिग ब्रदर बन जाते हैं. जैसे मिलाप से बात करो तो माने गाना गाता है जॉन के नाम से. When he starts singing, he starts doing a prayer for John. What is that big brother advice that John gave you, which you say, भाई मैं बहुत grateful हूँ उस advice के लिए. I think brother, I love you. Thank you. You've had so many quotes already. All right, there won't be one big brother advice. There'll be lots. But what comes to my mind straight away is Laksh, be a horse with blinkers, and I love that. You know, and keep your focus there. That's your Laksh. Go aim and get that. And don't look left and right what's happening, what is releasing, what is not releasing, what is working, not working, in other terms also. And just focus on your job, do it well. And that is actually something that worked very well for me. And that's why I think Attack happened and we made it the way we made it also. Because my single most aim was to write a first grade script that I would say, okay, for John Abraham to do this, produce this, then execute it, and today we're here releasing it, you know. So it's actually been like that, and it's just great advice. यार लोगों की फट जाती है, especially जब आप special effects वाली फिल्म करते हो, क्योंकि आज फोन पर people are seeing Hollywood films जहाँ पे 10-10 साल effects करते हैं, 1000 people working. कहीं तुम्हें वो भय था, डर था कि यार maybe my special effects, I hope not, will be compared to Hollywood and that might work for or against me? I think it's a make in India film. It's a very special film. Jai Hind. Yes. It's a super soldier out of India. Obviously, Laksh being young and he's the Instagram generation. काफी सारे फिल्म से उनको इंस्पिरेशन मिला है. He loves Marvel, DC, he loves the space. लेकिन हमारी फिल्म जो है is an original film. The special effects, I mean, I can say it, but Laksh will also say it कि प्रोडक्शन बजट जो होता है ना उसमें हम लोग स्पेशल इफेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. हमारा जो बजट था स्पेशल इफेक्ट्स आई थिंक इज़ 30-35% ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म. सो वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन स्पेशल इफेक्ट्स. सो व्हाटएवर यू सी वो काफ़ी अच्छा होगा. माने हिट के बाद और 4 जूते, एक जूते मेरे लिए. Done. बट आई मीन जूते पब्लिक नहीं मारेगी. पब्लिक ऑलवेज लव्स जॉन अब्राहम फिल्म्स, ठीक है. बट जॉन, ये इनर कॉन्फिडेंस, सेलिब्रेशन पार्टी हो, लोग मिलते एक दूसरे की वाहवागिरी करते हैं, ट्रेलर अच्छा हो या बुरा हो, इंडस्ट्री एक दूसरे की तारीफ करता है. आई नेवर सी यू स्टिल टिल डेट गोइंग टू पार्टीज, डूइंग वाहवागिरी, ट्रेलर अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप कुछ नहीं करते हो. मे बी यू सपोर्ट पीपल लाइक टाइगर श्रॉफ बिकॉज वो भी आपकी तरह जमीन से जुड़े हुए हैं. व्हाई टिल डेट आर यू अवे फ्रॉम ऑल दिस? बिकॉज आई स्लीप अर्ली, सो पार्टीज काफ़ी लेट शुरू होते हैं. एंड आई डोंट ड्रिंक, तो क्या करूँ मैं. एंड दैट वे लक्ष्य में दोनों ऑपोजिट है. ही इज़ अ पार्टी एनिमल, एंड तो आई डोंट थिंक पार्टीज इज रॉन्ग. कोई बुरा नहीं होता है, वो सिर्फ मेरी आदत है कि मैं जल्दी जाके सोता हूँ. और पार्टी में क्या बात कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ काम की बातें नहीं हो सकती वहाँ पे. फॉर मी वर्क इज एवरीथिंग. तो यानी कि यूड रादर गो टू अ बॉलीवुड पार्टी एंड डिस्कस वर्क, गेट टू द पॉइंट, देन डू कैसा चल रहा है, आप है तो बाहर आई वैसे टाइप्स. नो, आई वुड रादर नॉट गो टू अ बॉलीवुड पार्टी. यू नॉट. व्हाई डू यू फील समवेयर कि यू आर अ लोन रेंजर, यानी खुद अपनी पाथ पकड़ के चल रहे हो?
Not at all, not at all. I feel like that in my profession. लेकिन जो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हैं, I have a lot of friends and I have a respect for a lot of them. Who would you say are your closest friends? I think one of the closest people who is very supportive is Akshay. I love Akshay. I mean unconditionally. You know, हमारी फिल्म्स एक साथ रिलीज हुई है, हमने एक साथ फिल्म्स को प्रमोट किया है. उसकी जो मिशन मंगल रिलीज हुई, मेरी बाटला हाउस एक टाइम पे रिलीज हुई. And you were talking about it, I remember very well. उसकी जो गोल्ड रिलीज हुई, मेरी सत्यमेव जयते 1 रिलीज हुई एक ही टाइम पे. बट वी वर प्रमोटिंग, इसलिए नहीं कि मैं उसको बताना चाहता था कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ. बट आई लव अक्षय. अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट, आर्टिकुलेट, वेल ब्रॉट अप पीपल आई नो. एक जो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ because of my personal relationship with him, and personal is Mr. Amitabh Bachchan. Top man. Wow. And yeah, so there are a lot of people I have a lot of respect for. काफ़ी ऐसे directors हैं जैसे रोहित धवन. I love Milap. इतना अच्छा लड़का. You know, you find very few pure souls. He gets emotional about you. अब जॉन इब्राहिम का नाम लो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके. He's a very pure soul. अभिषेक शर्मा. तो काफ़ी directors हैं जो बहुत अच्छे हैं. But I think from the actors, I'd say Akshay is probably one of the closest people I've